Hello. Today we are here, unfortunately online, for one special episode for World Responsible Youth WRY, a Rotrack initiative. And this is the entrepreneurial podcast with Vivaan Bhandari. So his journey is quite unique. He has had a family business in a completely different sector, and he has made some, I would say, a decent amount of money in a completely different sector. So why don't we start off with your family business? What's it about? So the family business is about denim manufacturing. We white label and supply to retail brands and खुद के भी छोटे मोटे दो तीन brands हैं local. But basically jeans manufacturing. Jeans manufacturing. तो business में interest नहीं आया. नहीं पापा ने बचपन से बोल के रखा था कि फैमिली बिजनेस में कुछ ज़रूरत नहीं है घुसने का वो हम संभाल लेंगे खुद कुछ कुछ खुद का करो और when you turn 18 don't expect money from me. अच्छा, so जब भी तूने बोला कि ऐसा family business में you've not done something related to it, I expected something in textiles, but you did something completely different. What was that? What did you do to make some money? So I started a crypto mining venture. Ethereum mine करता था मैं to be specific. Hmm. And what happened was in during lockdown बहुत बूम पे था मतलब बिटकॉइन इथेरियम एवरीथिंग वाज एट इट्स ऑल टाइम हाई. सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने घर पे बोला कि ऐसे सब है एंड पहले मुझे छोटा इन्वेस्टमेंट एक जीपीयू था पड़ा था मेरे पास मैं गेम खेलता था कंप्यूटर पे तो उस पे मैंने माइन किया एंड एक महीने पे आई मेड अराउंड 45,000. दैट जीपीयू वाज वर्थ अराउंड 50,000 एंड इन 1 मंथ आई मेड 45,000 माइनिंग इथेरियम. तो फिर घर पे दिखाया मैंने मेरे चाचू को Okay. एंड उन्होंने बोला ये सब तो ठीक है बैंक में पैसा आएगा तो मानता हूँ क्रिप्टो में कितना पैसा है उससे फर्क नहीं पड़ता. तो वो हो गया बैंक में भी ट्रांसफर एंड देन माय फैमिली बैक्ड मी. आई टुक अ 15 lakh लोन फ्रॉम माय डैड and I promised to return it in a month and I was able to return it in 7 months itself. Okay, and let's leave how much you made, how much you returned in the end. But for now, like, खाली Ethereum था, or I thought Bitcoin, Dogecoin, all of that was on the boom. So why only Ethereum? कम जो ग्राफिक कार्ड्स होते हैं उससे सिर्फ एथेरियम ही माइन होता है. फॉर माइनिंग बिटकॉइन यू नीड एसिक माइनर्स. वो एक एसिक माइनर मतलब 5 10 15 लाख का आता है एंड मतलब यू नीड अ वेरी बिग सेटअप एटलीस्ट करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए टू प्रॉपरली माइन बिटकॉइन एंड एक्चुअली मेक मनी आउट ऑफ इट. बट एट दैट टाइम एथेरियम वाज समथिंग जो एनीबॉडी कुड स्टार्ट फ्रॉम देयर होम इटसेल्फ. Huh, so okay, you took 15 lakhs, and where did you set up your mine? इनिशियली मेरे घर में एक रूम खाली था तो उसको ही मैंने मेरा ऑफिस बना दिया and then I rented an office space after 4 5 months and I even hired 2 3 people to manage it. Acha. So is it all automated, or do you need a lot of human intervention in that? Initially it was manual but then I learned थोड़ा Python and I automated all the scripts and everything कि जब profitability low हो तो mining अपने आप stop हो जाए to save on my electricity cost Hmm. and unless कुछ major problem आ जाए तो बैठना पड़ता है 5 6 घंटे but बाकी तो automated ही तो. Acha. So considering that this is very electricity intensive, इसका electricity का around एक महीने का bill कितना आता है while you were mining? Electricity bill would easily reach 40 50,000 per month. What electricity service were you using? Reliance, Adani, what was it? अडानी था शायद. Shabash. Okay, so another question. When did you start mining? Because I think lockdown maybe Elon Musk came out saying that we will accept Bitcoin for Tesla cars. That's when the crypto market came up. So when did you start coming into this? So Bitcoin touched its all-time high उसके पहले ही मतलब the boom started before that. I Hmm. think I started in around May of 2020. So peak lockdown. Yeah, peak lockdown. अच्छा घर बैठे बैठे कुछ नहीं था, so you started making money. हाँ हाँ. Yeah. So yeah, for the final question, and I hope to, because there's not much here to know because you've already made your money and made success, your entrepreneurial success in the crypto market. How much money did you make?
एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बताऊंगा बट Ballpark? आई आई मेड around 10-15x of my investment and abhi bhi I have unsold cryptocurrency. I have unsold Ethereum in my wallet. Acha, to give some masala to the podcast viewers, yaar. So, is the number like above 1.5 CR? Around that. Okay. And I guess your dad was happy with the return on investment. Yeah, he was तो damn happy कि मुझसे पैसा नहीं मांग रहा अभी. Acha, and what do you plan to do with the जो बचा हुआ है wallet में crypto? So, what do you plan to do with that? So what not me but what we have historically observed is कि Bitcoin halving करके एक 4 साल में होता है. Where the Right. output of Bitcoin reduces every 4 years. For Hmm. example, अगर 20,000 Bitcoin निकल रहा था एक साइकिल में तो 4 साल Hmm. बाद 10,000 Bitcoin ही निकलेगा. So as the Hmm. supply goes low, demand बढ़ जाता है and price बढ़ जाता है. So my plan is to keep accumulating every Bitcoin cycle and keep selling off something. वो इस cycle को मैं करते जाऊंगा. So, do you think there will ever be a recession for crypto? I don't think so because the basic concept of crypto is demand and supply. And till the supply keeps reducing and keeps going lower and lower, demand will keep rising unless there's some very strict regulatory ban from the US government. इंडिया में तो बहुत स्ट्रिक्ट है बट यूएस गवर्नमेंट अभी तो ईटीएफ भी आ रहा है बिटकॉइन का तो यूएस गवर्नमेंट इज वेरी प्रोएक्टिवली सपोर्टिंग बिटकॉइन एंड इट्स अडॉप्शन. And how far do you see it? मतलब तू normal coffee shop में जा रहा है and you buy a coffee with Ethereum. How far is that idea? कि कभी नॉट होगा future? नॉट इथेरियम क्योंकि इथेरियम का जो गैस फी होता है एंड टू मेक इट सिंपल द ट्रांजैक्शन फी इथेरियम का Hmm. बहुत ज़्यादा हो चुका है बट देर आर ऑल्टरनेटिव्स सच एज सोलाना हो गया. तो सोलाना कभी काफ़ी बढ़ेंगे मतलब लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट के वजह से. और I think there will be some cryptocurrency, but I don't think so. It will be Ethereum. Ethereum and Bitcoin will always be looked at as a store of value more than a payment method. Okay. And I usually ask questions to all of my guests on my podcast about fads. So बीच में एक fad आया था about Dogecoin, the massive boom, like overnight millionaires बनाए थे इसने. What do you think about Dogecoin and where is it now? भाई वो तो मस्ती था मतलब I don't see उसका सप्लाई अनलिमिटेड है तो इट कांट हैव एनी इकोनॉमिक वैल्यू. बट वो मस्ती में लोगों ने उठा दिया जिसको पैसे बनाने थे उन्होंने बना लिए. और बाकी लोग अब रो रहे हैं Hmm. मेरे. रोज कोई ना कोई बोलता है मेरा मैंने क्रिप्टो करेंसी का चालू किया मेरा डोज कॉइन में डूब गया. अब क्या ही बोले. यू हैव टू हैव सम बेसिक सेंस ना थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा बिफोर Yeah, एंटरिंग right. इनटू समथिंग. Elon Musk ने एक ट्वीट डाला और सबने खरीद लिया. हाँ द सेम हैपेंड विद दिस गेम स्टॉप का शेयर इफ आई गेम स्टॉप ही था Yeah, कंपनी. yeah, yeah. Right, वॉल right, right. स्ट्रीट बेट्स करके एक रेडिट सब रेडिट था. उन्होंने Hmm. बस आर्टिफिशियली इतना पंप कर दिया बट उस कंपनी का उतना वैल्यू था ही नहीं. Oh, right, right, right. Chalo, then last question for you here, Vivan. We want to end this podcast with something for our viewers. So, how does a person start? Matlab, where do you get a wallet? Where do you buy Bitcoin? Where do you buy crypto? How do you start mining? And basically, where do you store it? Because I've heard pen drives and like a bunch of weird stuff, and it always confuses me. So, where does a beginner start? So for a beginner, I think the most basic software you can download to store your crypto is समथिंग नोन एज एन एक्सोडस वॉलेट. वो एक ऐप है आप आपके फ़ोन या आपके पीसी पे डाउनलोड कर सकते हो. एक्सोडस वॉलेट डाउनलोड कर लो और उधर स्टोर करो. और अगर ज़्यादा क्वांटिटी है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर हार्डवेयर क्रिप्टो वॉलेट सच एज अ लेजर वॉलेट जो यूएसबी वाला बोल रहा है. Hmm. Okay, so I guess that's it for today. Thank you so much, Vivaan. बहुत मजा आया. And if you have some tips, please मेरे साथ share करना because I would like to make some money as well. I've been living off my dad for the past 20 years. Okay, thank you so much for today, and we'll see you in the next episode. Thank you. थैंक यू जिनी दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. Thank you, Vivaan.